Assalamu alaikum students. Thank you very much for joining the class. I am Sir Ahmed Shah. We are discussing the topic about the properties of metals. In the previous lecture, we have been discussed the topic, the general properties of metals. Now, we are discussing here what is reactivity series. And in this component, we have discussed introduction, position in the periodic table, physical properties of metals in the part 1, metals in alloy, it will be discussed. But now the topic is here is the reactivity series. This topic is very important, not only the metals, it also can be discussed in the electrolysis chapter and the redox as well. ये सिंगल टॉपिक न सिर्फ मैटर्स में बल्कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस में भी कंसर्न होगा। अभी मैंने आपसे बात की है, दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, they are called highly reactive metal, HRN. These metals easily react with the cold water, produce their hydroxide. Sodium plus water change into sodium hydroxide. अब अगर हमें इक्वेशन को फॉर्म करना आता है तो we can produce our equations. Similarly, what happened when potassium reacts with water? The state should be solid. Reacts with water, H2O. The pattern of the equation is same for the formation of equation. H2O is liquid. Now, potassium hydroxide is formed. Aqueous means water soluble plus hydrogen gas. Same pattern of the formation of equation for the group number 1. So which are potassium, sodium, lithium, when they react with water, they produce hydrogen gas, and their hydroxides. Similarly, if calcium metal react with water, equation should be produced in this manner. Calcium hydroxide is produced. Two has been placed after the bracket because valency of calcium is 2 plus, hydroxide valency is 1 minus. So with a balance करने के लिए we just transfer the valency of calcium below OH. Hydrogen gas is produced also. Same result. Because these metals easily react with water, produce their hydroxides. Similarly, if sodium reacts with acid, like HCl aqueous, same result. Salt is produced plus hydrogen gas is produced. Potassium, sodium, calcium is all elements from group number 1 and 3 elements in group number 2 which are calcium, strontium, barium. These 8 metals easily react with chilled water, cold water. Their reaction with the hot water is violent, vigorous, or these metals when react with acid, so fast, so violent. तो यूं इसका मतलब ये क्या हुआ? पोटेशियम to calcium, they are highly reactive metals. They can react with water in the cold form, cold water, as well as in acid violently. So this is the topic related to the reactivity series. अब आगे चलते हैं. तो react with cold water, इसलिए ग्रुप नंबर 1 के metals को they are called alkali metals.
So these metals should be stored under the surface of oils, kerosene oil, cooking oil. So water cannot touch these metals and this reaction should not be happen. Cold water से react कर रहे हैं, so these metals react violently with dilute acids. Vigorous, violent, vigorous, violent, vigorously fast, violently very fast. But the metals in the reactivity series towards your right side, like magnesium till lead, magnesium till lead, all metals are including here, all transition metals, all transition metals except copper, mercury, silver, gold, platinum. These metals cannot react with acid, they cannot react with water or steam at all. So these five metals are known as noble metals. Noble elements means those elements have completely filled their valence shells. Group 80 elements are called noble gases, gases. But these five metals, or out of these five metals, all are transition metals. All are transition metals. These five transition metals cannot react with steam, cannot react with water, cannot react with acid at all. But these metals, magnesium till lead, and the rest of the metals are called moderate reactive metals. Moderate reactive metals. And below hydrogen are called least reactive metals, noble metals. बार बार emphasize कर रहा हूँ. Noble metal means these metals cannot react with steam, cannot react with acid, concentrated and dilute. React with steam with decreasing ease means magnesium plus steam. जब water in the form of gas above the 100 degrees Celsius, it is called vapors. It is called steam. Here is a difference in these two equations. Group 1 metals and group 2 metals, calcium, strontium, barium, when they react with water or acid, they produce their hydroxide. When metals react with water, they produce their hydroxide, or when these metals react with acid, they produce their salt, but hydrogen gas is evolved. When magnesium react with steam, they produce oxides, not hydroxide, not hydroxide. हाँ, और further reaction होगा तो magnesium oxide again combined with the steam, then hydroxide is formed. But in the first case, they produce their oxide. Here is a difference. Highly reactive metals, group number 1 and group number 2, calcium, strontium, barium, these 8 metals, 5 from group 1, 3 from group 2, and group 2 metals are calcium, strontium, barium, these 3 plus 5 from group 1, these 8 metals are considered as highly reactive metals. These metals violently react with acid. These metals vigorously react with steam, with water, even cold water, steam, hot water, all. But these 8 metals produce their hydroxides, और जो moderate reactive metals हैं, all metals except group 1, group 2, they are called moderate reactive metals. Because when these moderate reactive metals react with steam, produce their oxides. और जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, अच्छा अब हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, magnesium plus steam change into magnesium oxide. Aluminium solid react with steam, produce its oxide. Similarly, iron is moderate reactive metals. One of the moderate reactive metals. तो यूं जितनी भी metals हैं, magnesium till lead, when they react with steam, they produce their oxides. Hydrogen gas is produced. They do not produce their hydroxide. Moderate reactive metals from magnesium till lead, they produce
Hydrogen gas, they produce their oxides when they react with steam at various temperatures. Magnesium reacts with water around 250 degrees Celsius. Aluminium with steam reacts around 700 to 750. Iron reacts with steam around 1700 degrees Celsius. So these metals can react with steam. Okay. Now these metals can react with the acid easily. इसीलिए हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए नॉर्मली मैग्नीशियम और जिंक और आयरन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन शॉर्ट these metals accept noble metals when they react with water or steam or acid. Hydrogen gas must be produced. Hydrogen gas must be produced. अब जरा इसकी एग्जांपल देखिएगा. चलिए बिलो कैल्शियम की बात बाद में, पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम react with acid HCl, HNO3, H2SO4, ethanoic acid, any kind of dilute acid. For its salt, but hydrogen gas is produced during this reaction definitely. Similarly, when aluminum reacts with acid HCl, HNO3, H2O4, ethanoic acid, carbonic acid, also produce its salt, but hydrogen gas is evolved during the reaction. So all metals, they can react with water or steam or acid. Hydrogen gas must be produced. Hydrogen gas must be produced. Okay? अब मैं स्लाइड को चेंज करना चाहता हूं, तो जरा समझ लेना. Highly reactive metals, all metals from group number 1A and the 3 metals from group 2A, they can react with water and acid at normal temperature, even chilled. These 8 metals are called highly reactive metals. Rest of the metals except 5 are known as moderate reactive metals. और अभी प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की थी. अब देखो इस वक्त यहाँ जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, these reactions are called displacement reaction. Sodium is found above the hydrogen, so sodium displaces hydrogen from water, produce their hydroxide. Magnesium reacts with water or steam, so hydrogen can be displaced. Hydrogen can be displaced from water or steam. Similarly, magnesium react with acid. So beta magnesium is found above the reactivity than hydrogen. So magnesium displaces hydrogen from its compound, or hydrogen remains as a neutral element. One more thing. This reaction cannot be happened. Why? Ag, silver plus HCl, HNO3, any acid, no reaction. So beta, those metals which are found below the hydrogen, so these metals, copper, silver, gold, mercury, that they cannot displaces hydrogen from the acid or hydrogen from the water, so the reaction cannot be possible. In short, the above metal displaces the lower metals from their compound, but lower metal cannot be displaced upper metals from their compounds. ये आपका ये कंसेप्ट है आज का. अब हम चलते हैं कि मैंने इनको क्यों नाम दिया है नोबल मेटल्स. कॉपर एंड बिलो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. These metals do not react with water. These metals react only with the concentrated acid. तो concentrated acid से
डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फर्दर एक्टिविटी होगी. बट डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है. बेटा कॉपर टू बिलो कॉपर at any temperature cannot react with water, steam, cannot react with dilute acids, cannot react. ओके. अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर ऐड कर दूं, जरा देखिएगा. कॉपर मेटल react with H2SO4 concentrated acid, produce copper sulfate, produce water. अब मुझे बताइए, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है? कॉपर कैन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और नॉट? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, no reaction. But if these metals exist in their oxide form, now the reaction is possible. Now, reaction is possible. This is called neutralization. This is called neutralization. Similarly, copper oxide, when reacts with H2SO4, produce copper sulfate plus water. So, इन मेटल्स के ऑक्साइड तो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे. सॉल्ट वाटर इज फॉर्म, बट द सिंगल मेटल्स कैन नॉट बी रिएक्टेड विद एसिड dilute form. Cannot. So now we have to change our slide. अब हम कुछ एक टेबल आपको दिखा रहे हैं फर्दर रिएक्शन को देखने के लिए. मोर रिएक्शंस. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Stability of compound can be summarized. This topic will be discussed later. Yes, this is the easiest way to learn what happened, which metal can react with acid or water. In the reactivity series, potassium, sodium, calcium react with cold water, violent reaction with dilute acids. Description is here. Magnesium till iron, even lead. It react with steam, but react with dilute acid, decreasing ease. Line is above. हाइड्रोजन के ऊपर लेड जो है वो भी मैग्नीशियम टिल लेड, मैग्नीशियम टिल लेड. ये लाइन यहां पर आएगी इन दिस वे. ओके, इन दिस वे. मैग्नीशियम टिल लेड. So magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, these metals can react with steam. They can react with dilute acids. But copper, mercury, silver, platinum, copper, mercury, silver, gold, platinum, these metals not attacked by water or steam at any temperature, or these metals only react with concentrated. Here, some words are there. Dilute acids. Dilute acids. So these metals highly reactive, moderate reactive metals can react with dilute acids to produce their substances, but these metals only react with the concentrated acids. Okay. अब हम इससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, डिस्प्लेसमेंट पावर ऑफ मेटल, ये जरूर देखते हैं आप.
Reactive metals can reduce oxides of less reactive metals. This equation is known as thermite process electric welding. Thermite process or electric welding. Iron oxide solid plus aluminium. So aluminium is found above the series in the reactivity than iron. So aluminium displaces iron from its compound, produce its compound, iron becomes changed. क्यों? एल्युमिनियम ने इस आयरन को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल दिया. इट मींस upper metal in the reactivity displaces lower metal ion from its compound. तो अगर मैं मैग्नीशियम इस एल्युमिनियम मैग्नीशियम होता तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल होता. अब अगर मैं तुमसे कहूं एल्युमिनियम ऑक्साइड ये कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम बिकम सेपरेट इन द लिक्विड फॉर्म क्योंकि ये टेम्परेचर देना पड़ता है. बट दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. नो रिएक्शन. नो रिएक्शन. नो रिएक्शन. Zinc no reaction. अब जरा सुनो. Zinc is found below the reactivity than aluminium. So zinc cannot displaces aluminium. But this reaction is happened. Isn't it? अब बात समझ में आ रही है कि what does mean the displacement power. Upper metals in the reactivity displaces the lower ions of metal from their compounds. तो जहां पर रिएक्शन तो आपको रिएक्टिविटी याद करनी है और इसको याद करने का एक मेथड मैंने आपको पहले भी कहा था. अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं. इसे कहते हैं पोसो का माजिक. पोसो का माजिल. हाई क्यों आए. अब ये पोसो का माजिल. O stands for potassium. O means potassium. So means sodium. Ka means calcium. M means magnesium. A means aluminium. Z means zinc. I means iron, not iodine. Iodine is non-metal. L means lead. H means hydrogen. C means copper. और AU और AG. A means silver. A means gold. और हाई क्यू आई में H को शामिल कर लो इन बिटवीन एक. ओके. तो ये याद करने के लिए पोसो का मासे. पोसो का मासे ये इसकी टेक्निक है. पोसो का मासिल. हाई क्यों है. ये आई आयरन है. एल लेड है. जेड जिंक है. ए एल्युमिनियम है. एम मैग्नीशियम. का कैल्शियम. सो सोडियम. ओ पोटेशियम. ठीक है. अब जरा एक और चीज ताकि हम यहाँ पर आपसे इस चीज को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं. फिर अब
अब मैं जो बात आपसे कर रहा हूं जरा इसको देखिएगा। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। These elements are in group number 1। अब बेटा इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इट मींस cesium is much more reactive than rubidium, then potassium, then sodium, then lithium। अगर मैं रिएक्टिविटी को प्लेस करना चाहूं बिफोर फोसो का माजिल, तो मैं इसकी सीक्वेंस को कैसे बना सकता हूं? मुझे लिखना चाहिए ये, मुझे लिखना चाहिए पहले सी एस, फिर उसके नीचे आना चाहिए आरबी, फिर उसके नीचे आना चाहिए पोटेशियम, फिर उसके नीचे मौजूद होगा सोडियम। और आप देख सकते हो ये तो आपके पास मौजूद है का ना पोटेशियम। सही है, खाला नसीमा का मुन्ना ना पढ़ना, ओसो का माजे। तो यूं किसी भी मेटल ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है मच मोर रिएक्टिव, क्योंकि मेटल्स आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। बेटा इनकी भी रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम। अब जब आपके पास आ गया सोडियम, तो उसके नीचे आप लिख देंगे लिथियम। और अगर मैं इसको प्लेस करना चाहूँ ग्रुप नंबर 2, बताओ कैल्शियम के बिलो क्या लिखा हुआ है यहाँ? कैल्शियम के बिलो क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम। तो मुझे इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा इसको। मुझे लिखना चाहिए ये बेरियम, बिलो बेरियम होना चाहिए एस आर, बिलो एस आर होना चाहिए सी ए, और फिर सी ए के नीचे आएगा एम जी, और फिर एम जी के नीचे आना चाहिए बेरिलियम। आ रही बात समझ में? तो मेटल्स के ग्रुप की रिएक्टिविटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंक्रीजिंग। पहले ग्रुप नंबर 1 की रिएक्टिविटी आएगी उल्टा, और फिर ग्रुप नंबर 2 को 1 के नीचे जोड़ देंगे उल्टा करके, डिक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट है। अब मुझे बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? इज इट क्लियर नाउ? टेल मी अबाउट इट। सो वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू डिस्कस मोर। अब जरा यहाँ पर फर्दर एक्टिविटी देखिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, as it produces a lot of heat enough to melt the iron proceed or produced. This reaction thermite process is generally known as electric welding. Electric welding. Reactive metals can displace ions of less reactive metals. Iron is above the reactivity than copper. That is why iron displaces copper ion from its compound, produce iron sulfate. अब बेटा इसकी अपीयरेंस क्या होगी? आयरन सॉलिड था, कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, ब्लू कलर, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कंडीशन क्या हो? क्या चीज बन रही है? आयरन सल्फेट। आयरन टू आयन का कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो, येलो। ये अपीयरेंस है। कॉपर का कलर सॉलिड फॉर्म में पिंक और रेड ब्राउन, पिंक और रेड ब्राउन। तो बेटा आयरन टू सल्फेट का कलर येलो और ग्रीनिश येलो, याद है ना? आपने मैंने पढ़ा था क्या? आयरन टू की कंडीशन क्या थी? डर्टी ग्रीन, प्रेसिपिटेट बना रहा था। अब ये कॉपर पिंक शेड में होगा,
या फिर रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। तो आपने इन चीजों को याद रखना है, तभी तो आप आंसर दे सकोगे। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, तो कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो ब्लू सॉल्यूशन चेंज इनटू येलो और ग्रीनिश येलो, और पिंक सॉलिड डिपॉजिट इन द बीकर इन द फ्लास्क। ये है इसकी अपेरेंस। और आपको क्वेश्चन पेपर में सो मेनी क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द सेम इक्वेशन, सो मेनी टाइम। ओके, जस्ट few lines are remaining. What does it mean? Ionic equation. It is not related now, but here, before reaction, copper is 2 plus charge and iron is neutral. All elements or metals or non-metals in atom form, in element form, are neutral in nature because their proton and electron are equal in number. So, copper before reaction containing 2 plus charge, after the reaction, copper becomes neutral. 2 plus charge change into 0, gaining of electron. Iron before reaction is 0, change into iron to iron. So, beta, SO4, SO4, there is no change in sulfate ion. 2 minus, 2 minus. When the ion in the equation, if their oxidation number does not change, oxidation number does not change, are called spectator ions, are called spectator ions. So in this equation, sulfate ions are spectator. तो जब हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन में से स्पेक्टेटर को माइनस कर दें, डिलीट कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो रिमेनिंग इक्वेशन इज नोन एज आयोनिक इक्वेशन। स्टूडेंट एक बात सुन लीजिएगा कि कॉपर आयन पर 2 प्लस चार्ज क्यों है? वी नो दैट SO4 contain 2 minus charge, so 2 minus and 2 plus both are equal and same. This is the reason behind it. So copper before reaction is 2 plus, iron is 0, but after the reaction, copper retain gains 2 electron, so plus 2 charge return back to neutral form after gaining the electron. Iron release its electron, so the iron becomes 2 plus ion because 0 change into 2 plus with the FeSO4. One thing, the name of the compound is iron 2 sulfate because valency of iron is 2 in this compound. If I write the formula Fe2SO4 taken thrice, what will be the name of this compound? This compound is known as iron 3 sulfate. Okay, so beta, check the formula. Iron 2 sulfate formula is FeSO4 or iron 3 sulfate is Fe2SO4 taken thrice. This is the difference between, so before reaction iron was 0, but in the reaction iron becomes 2 plus. So due to the presence of sulfate ion SO4, so one sulfate ion is here, SO4 is 1, not 4. Huh. One sulfur combines with 4 oxygen, produces one sulfate radical or ion. So iron valency in this compound is 2 plus ion. ये था आज का हमारा टॉपिक। ये तो आपके पास जो इक्वेशन थी, ये तो डिस्प्लेसमेंट पावर ऑफ मेटल्स थी। अब हम आपसे बात करते हैं सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन। Reaction occurs. Sodium chloride is produced plus iodine becomes neutral. Because यहाँ पर chlorine is found above the reactivity, so chlorine displaces iodide from its compound. But this reaction is not visible, not possible. No reaction. रीजन क्या है? रीजन ये है,
chloride above in the reactivity in the group, then chlorine, then bromine, iodine, astatine. So beta, these non-metals, upper halogen displaces lower halide from their compound. तो यूं पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, पोटेशियम क्लोराइड ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, ये था आज का हमारा कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट.